Good afternoon, everyone. I'm Ritika Kapoor, Assistant Professor, Trinity Institute of Professional Studies, Dwarka. I would like to welcome all of you for this insightful session. First of all, let me acknowledge our Honorable Chairman, Sir Dr. R.K. Tandon, for always being a source of inspiration for all of us. He was really willing to join today for this session, but due to his prior commitments, he is unable to join us. I would like to welcome our respected Director, Dr. Barkha Behel ma'am, and Dr. Mukta Sharma ma'am, HOD, CS and IT, and all my fellow colleagues. We thank you all for your gracious presence. We are delighted to welcome our former students on behalf of the Fraternity of Tips. I wish to welcome our alumni with a beautiful quote by Sundar Pichai. As a leader, it is important to not just see your own success, but focus on the success of others. We are glad that our former students have graciously accepted to be a part of this webinar and disseminate their knowledge with our current batch students. We are really happy to see them turning into wonderful leaders by sharing their success mantras. I would like to welcome the first panelist, Mr. Rahul Sharma, BCA Alumni 2013-16 batch, Ms. Anupama 2016-19 batch, Mr. Siddhant Pant 2017-20 batch, Ms. Puja Sharma 2017-20 batch, Mr. Prem Kumar Mishra 2017-20 batch, and Mr. Samarth Shukla 2017-20 batch. I would like to welcome all the current batch students for this interactive session with the alumni. I'm sure this will be an insightful and enriching session, and I firmly believe our former students will be able to handle all your queries as per best of their attempt. Now I would like to welcome our director, ma'am, Dr. Barkha Behel, with a bouquet of flowers. Good afternoon, ma'am. Thank you, Ritika. Dr. Barkha Behel is the Director and Professor at Trinity Institute of Professional Studies, a NAAC-accredited institute affiliated with GGS IP University. She has over 3 decades of teaching, research, and administrative experience. She has published numerous research articles and various publications in reputed national and international journals. She has been a source person for value-added courses, faculty development programs, and chaired sessions and conferences. She has edited more than 10 conference proceedings. She has numerous research projects to her credit. Now, I would like to invite Dr. Barkha Behel, Director Tips, to kindly give the welcome address to the audience. Thank you, Ritika. Welcome, ma'am. It gives me pleasure to address all our students and alumni for this corporate mentorship session. And I really feel elated to welcome all our alumni who have connected today with us and agree to give their inputs for the growth of our students and guiding them to achieve their desired goal in their lives, be it higher studies, job, or their own venture. I once again welcome Mr. Rahul Sharma, Anupama, Siddhant Pant, Samarth Shukla, Puja Sharma, and Prem Mishra for holding this session. And I hope that the students in true sense would be benefited with this session today and also be motivated to give back to the institute in its growth path once they themselves would be alumni. I would like to appreciate the efforts of all the CS and IT department faculty members and students who have participated today and who have worked towards the success of this event. Special thanks to Ritika and Dr. Mukta for holding this session and working towards its success along with their all the team members. I would like to also mention Dr. R.K. Tandon sir's contribution, who has always been motivating and supporting us to hold such events for the growth and benefit of the institute. I hope that students will be enjoying this session and learning also through the experience of our alumni. Thank you.
Thank you, ma'am, for your kind words. Your enlightening words are always a treat to the ears. Thank Moving you. forward, I would like to introduce our distinguished alumni to all of you. Mr. Rahul Sharma, an alumni of BCA 2013-16 batch, has completed his MTech from BITS Pilani and currently working as a senior test engineer with Wipro. His domain is automation testing and he is currently associated with US-based clients. Miss Anupama, our BCA 2016-19 batch alumni, she is currently pursuing MBA with Marketing and Strategy specialization from Ford School of Management. She has done her internship with Reserve Bank of India, New Delhi. Now she has been placed through campus recruitment with ICICI Bank Limited as a deputy manager. Mr. Siddhant Pant, an alumni of BCA 2020 batch, is pursuing MCA from Banarsidas Chandiwala Institute affiliated to IP University. He has done an internship from Inglu as a web designer. He has currently joined NCR Corporation as an IT analyst. Ms. Puja Sharma, batch BCA 2017-20, is currently working as an operations executive along with the testing team at Infosys Limited. She has recently qualified 4 certifications based on different languages and methodologies, namely Agile, DevOps, Selenium, and Java. She has keen interest towards writing poetry and blogs. Mr. Prem Kumar Mishra, BCA batch 2017-20 alumni. He is working as a director and owner of MHV Media OPC Private Limited. His startup is dedicated to target 6 different sectors, namely security, safety, fashion industry, website creation, automobile industry, e-commerce portals, and software development. Last but not the least, we have Samarth Shukla, BCA 2017-20 batch alumni, who has currently enrolled in IIMC for a PG diploma in English journalism, along with being an independent musician artist. He has also worked in a startup company where he used to manage the content and plan offline and online marketing strategies. Now, we would like our alumni to talk about their odyssey from a college graduate to the outside world. So, let me request our first panel member, Mr. Rahul Sharma, to talk about his voyage, as he was always a brilliant student during his college days. Over to you, Rahul. Thank you, ma'am. Thank you so much for the warm welcome. Hello, team. Hello, everyone. Good afternoon. I hope you're having a great weekend. So, hi, as some of you know me, some of you don't. So, I'm Rahul Sharma. I was a part of Trinity Institute of Professional Studies, and I was a part of from the batch of 2013 to 2016. And then from there on, I got the campus placement into Wipro. From there, my journey began. Before that, I worked in a short span of time with Adobe, if you might have heard, as a Photoshop specialist. Over there, I used to do some Photoshop helping with the people with the interacting with the US-based customers. And then I joined Wipro shortly after 3 months of span, as the long-term plan was always going into the IT industry. And then from there, I did my MTech parallelly. So it was a very difficult journey, but yet very exciting journey, in which it was like we were supposed to have go through a 4 years of course, under which like first 4 years, like 3.5 years were the complete studies plus work. And then after that, these last year were the complete internship within the Wipro. So the journey was something like this. So Monday to Friday, we used to work as an normal employee of the Wipro. So there was no distinction. We were not given any margin like, okay, you are a student, so you can do this, you can do that. We will have to be completely in line with the Wipro policies. And then Saturday or Sunday, either one of the day, we used to have our classes. So that was around 8-hour classes per weekend. And then our mid-sems, final semester and everything. And then once we graduated from there, we did our post-graduation. We got our degrees from BITS Pilani. And then we became the part of that prestigious Wipro company. So the journey was completely great, to be honest. It was very exciting. It was full of adventures and everything, like full on masala type things, if I say it frankly. But yet, yes. So the only thing that I can say to you guys is on this part is like, you have to be focused and very much dedicated to what you are doing, because till the college time, it was very exciting. Okay, you have to do college, you have to just give exams and that is done. But once you step up into these industries, and if you
are a full-time employees with these are very great opportunities to grow up in the future. And talking about me, currently I am working with contract based through Wipro. I'm being contracted with the HP. So my current status with this is that I'm a senior test engineer / full stack developer that is in process, plus the scrum master for the internal team. So I am deliverable and I'm responsible for the delivery for 3 projects simultaneously to the US customers. So if you guys use printers and everything, so any HP printer that you see in the market goes through by us, that has been developed by us. And right now we are working on those apps called HP Spark. So if you are printer friendly person, you must be knowing about that app. That is a very great app. So that has been built by us. I have been handling that thing from end to end, from scratch. We have started that and we have developed it. Earlier we were developing that website, and now we are into the app development. So we support all 4 kinds of platform on that. So I'll not go into that detail, but yes, this is pretty much about me. So I'll be happy to answer any of your questions if you have any. So yeah, thanks, ma'am. Thanks for the introduction. Thank you, Rahul, for briefing about your accomplishments. Really proud of you. Thank you, ma'am. Now let me call Anupama to share her life journey with all of us. Anupama was an enthusiastic learner. I remember she used to participate in various competitions and bag laurels for Trinity. Over to you, Anupama. Thank you, ma'am, for this beautiful introduction. I hope I'm audible. Yes, Anupama. So, yeah. So starting with my journey, I would recommend you all, first of all, to utilize every opportunity you get currently being in part of this curriculum. Participate in every kind of competitions the college offers, because this gives you a lot of exposure. And for my personal growth, it helped me a lot being confident in front of the crowd or facing any sort of difficulties in future. So my journey at BCA at Trinity Institute was really with full of energy and full of new opportunities. After that, I was placed with few companies, but the decision was too hard for me to leave the job and go for the post-graduation course, because in today's competitive world, you need to have a post-graduation degree, because everybody is there who are graduate, and how can you highlight yourself in front of the crowd? You have to have something apart from them. So basically, I did MBA after BCA. So in MBA, I've prepared for CAT, and I prepared it for 2019. I have dropped a year to go for a good college. I have prepared for CAT, and I somehow cleared it and got a very good college, that is Ford School of Management. And there also I had the same mantra to utilize every opportunity you get throughout your journey. And I have had a lot of internships, especially with RBI, because that really created a big impression in front of different companies. And that too, that I got because I'll tell you the secret, that be honest wherever you are, be honest in front of the interviewer, be honest wherever you are. So this help you go a long ways. And after that, after a lot of internship journeys, I finally got placed with ICICI Bank. And now I'm looking forward to join the company and serving like I always did in every career path I got so far. So thank you so much. And I hope I'll answer your interesting questions in further session. Thank you, Anupama. It was good to know about your experience. I would like to invite Siddhant Pant to talk about his journey from college life to the corporate world. Siddhant was a very intelligent student. Over to you, Siddhant. Thank you so much, ma'am. And I hope everyone is healthy and happy with their families and friends. So starting with my introduction, that I'm an IT enthusiast, and right now I'm pursuing my MCA from Banasitas Chandiwala Institute of Information Technology. So I've done a lot of internships from
from where I got my first internship from Trinity. So it was a web developer role in Inglu, and after that internship, I got to know that I can be a part of the development world in the IT industry. And after that, I have done two more internships where in the second internship I was a content developer, and the another internship I was the business analyst, as I was exploring all the fields of IT. So in the COVID time, I got like I want to explore all the IT fields. So I enrolled for a certification from Board Infinity, where I was in the top 5 students from India, where after that I got like a designation of a certified data scientist. And after that, I realized that I have to be in the development side, and for that I need to do my MCA. So I enrolled in the MCA, and for the past 1 year, I've been in the list of top 10 MCA students of IP University till now. And from there, I got the placement to the NCR Corporation. So right now I'm in the analysis phase. So I'm designated as the IT analyst. But after 2 to 3 months, my designation will be application developer engineer. So that was all about myself, and I'm ready to take any questions. Thank you, ma'am. Thank you, Siddhant, for sharing your story of life, which was wonderful. Now let me call Puja Sharma, an intelligent student with a beautiful heart, who believes in serving the poor and needy. She had been associated with NGOs and has been a part of various social causes during her stay at Trinity. Over to you, Puja. I think there is some connectivity issue. Okay. Now I would like to welcome Mr. Prem Kumar Mishra to apprise us about the life odyssey. Prem has always been a technocrat and was a great explorer of technology. Over to you, Prem. Thank you so much, ma'am, and thank you so much, everyone. I think I'm audible to all of you. Yes, Prem, you're audible. Thank you so much, Barkha ma'am, especially Mukta ma'am and Ritika ma'am for all these things. मुझे पता है यहाँ पर अधिकतर लोग जो सुन रहे हैं वो हमारे जैसे होंगे, जो या तो अभी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में होंगे, और मैं कुछ ज़्यादा बातें नहीं करूँगा. वो चीज़ें मैं बताऊँगा जो कनेक्ट कर सके और साथ में उनके लिए हेल्पफुल हो. सो जैसे अगर मैं लाइफ जर्नी की बात करूँ तो आई हैव कंप्लीटेड schooling from Kendriya Vidyalaya Pitampura. Then I did my graduation from Trinity Institute of Professional Studies. और BCA कंप्लीट होने के बाद जो है, जैसा कि लॉकडाउन वगैरह हुआ और बहुत सारी चीजें हुई, इस टाइम पर प्रॉब्लम सबके साथ थी और कहीं ना कहीं सभी लोग एकाएक चीजें, लाइफ पूरी तरीके से बदल गई और बहुत कुछ बदला, बहुत सारी चीजें बदल गई. कहाँ कॉलेज था, कहाँ स्कूल था, कहाँ क्या चीजें थी, सब कुछ बदल गया पूरी तरीके से. तो इस टाइम पर कुछ लोगों ने कुछ नई चीजों को एक्सप्लोर किया और साथ में कुछ पुरानी चीजें जो चल रही थी वो एकाएक स्टॉप हो गई. हालांकि इसके ऊपर आएंगे अपन. मैं बात करता हूँ जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, उस टाइम की बात मैं आपको बताता हूँ. उस टाइम पर मेरा ऐसा रहता था कि मंडे टू फ्राइडे मुझे कॉलेज जाना है, सैटरडे को मैं लीव लेता था और संडे 2 दिन मेरा होता, 2 दिन मैं हमेशा बाहर रहता था. इसका रीजन ये था कि मुझे कुछ नया एक्सप्लोर करना था और इन 2 दिनों में मैं कभी कभी गुजरात, कभी महाराष्ट्र, कभी तेलंगाना, कभी कहीं रहता था. और कई बार ऐसा भी होता था कि मैं रिटर्निंग बैक वहां से डायरेक्टली ऑफिस ही आता था, बैग लेकर जाता था और बैग लेकर ही आता था. तो इसके बाद जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ और साथ में लॉकडाउन वगैरह हो गया, तो अभी मैंने जो है हॉनरी डॉक्टरेट के लिए अप्लाई कर रखा है पब्लिक स्पीकिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट में. ये चीजें साथ साथ चल रही है. अब मैं अगर बात करूं कि आज जो मैं बात करने वाला आपसे बिजनेस, किस तरीके से मैंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया और किस तरीके से आज वो स्टार्टअप आज
वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है। आज अगर मैं बात करूं तो बहुत लोगों को हम इंटर्नशिप दे रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ के इन ऑफिस काम कर रहे हैं, बहुत लोग इन फील्ड वर्किंग हैं, बहुत सारे डेवलपर्स आज चाहे अफगानिस्तान हो, सॉरी पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे फिर वो आपके रसिया हो, इन जगह से डेवलपर्स हमारे लिए काम करते हैं। इसके अलावा इंडिया के अलग अलग जगह से डेवलपर्स है, बहुत सारी चीजें हैं। जिस टाइम में स्कूलिंग कर रहा था, 10th और की बात है, उस टाइम ही मुझे था कि मुझे कुछ अलग करना है, और उस टाइम से ही मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग करी। स्टार्टिंग से मैंने किया था रियल एस्टेट में, बट काफी हार्डवर्क करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद वो आइडिया ड्रॉप आउट हो गया, फेल हो गया, बट एक्सपीरियंस वहां से मुझे काफी सारा मिला। उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ और ट्राई करते हैं। पहला चीज तो फेल हो गया, तो मैंने दूसरी चीज ट्राई करी थी उस टाइम पर, कि किस तरीके से मैं जो है यूट्यूब और बाकी इस तरह के प्लेटफॉर्म पर इन्फ्लुएंसर बनकर लोगों को कुछ गाइड कर सकूं, एजुकेट कर सकूं। तो जब मैंने वो स्टार्ट किया तो वहां पर भी मैंने काफी काम किया, और उसके बाद जो है कुछ टाइम के बाद वो भी फेल हो गया। 5 से 6 महीने मैंने काम करे थे, और उस टाइम पर समझ सकते हो आपकी एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट, उसके बाद जो है 2 से 3 अलग अलग ट्यूशन, और उसके बावजूद जो है उसको 3 से 4 घंटे किसी चीज में रेगुलर देना पड़ता है, और 5 से 6 महीने काम करने के बाद वो किसी रीजन से सब कुछ एकाएक खत्म हो जाता है, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं कि काम करना कैसे है, कोई बताने वाला नहीं। और साथ में हम सब के लिए उस टाइम पर ये नया था जब मैं 11th क्लास में था। उसके बाद फिर मैंने 5 से 6 महीने का ब्रेक ले लिया, और उसके बाद जब मैं 12th का मेरा एग्जाम स्टार्ट होने वाला था, एंड टर्म दिसंबर की बात है, उसी टाइम पर मैंने जो है एक और जो है चैनल वापस से यूट्यूब पर स्टार्ट किया, और उसके बाद जो है उसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो उस टाइम पर मैंने देखा कि जो है लोग बहुत अनएम्प्लॉयड है इंडिया में। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास स्किल्स है, जिसके पास सारी चीजें हैं, बट उनको ये नहीं पता कि उनको लाइफ में करना क्या है। वो अपने विजन को लेकर क्लियर नहीं है, या फिर उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। और फिर मैंने उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको गाइड करना शुरू किया, और साथ में उनको कुछ ना कुछ बताना शुरू किया। तो देखा कि दे आर अर्निंग मनी, और वहां से कुछ पैसे मैंने भी कमाने शुरू किए। ये सब चीजें चलते चलते काफी टाइम हो गया। उसके बाद जो है मुझे लगा कि अब कुछ नया करना चाहिए। तो उस टाइम पर मैंने सोचा कि एक बार ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या होता है समझा जाना। तब तक मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे बताया कि जो है इस तरीके से एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता है। मैं आपको एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन, उस टाइम पर छोटे प्रोजेक्ट की बात करूँ तो उन्होंने कहा कि आप जो है मार्केट में 3 से 5 हज़ार रुपये ले सकते हो, और मैं आपको वो सस्ते रेट पर बनाकर दे दूंगा। तो वहां से मैंने प्रोजेक्ट उठाने शुरू किया, और उसके बाद जो है हर प्रोजेक्ट में मुझे 500 हज़ार रुपये बच जाते थे। उसके बाद एक दिन मुझे पता चलता है कि वो प्रोजेक्ट जो बनाने के लिए डेवलपर मेरे से 3000-4000 रुपीज चार्ज करता था, और आगे से मैं 5000 रुपीज लेता था, 1000 या फिर 500 मेरा मार्जिन था। उस प्रोजेक्ट को बनाने में बड़ी मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगते हैं। कुछ ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उस चीज ने पूरी तरीके से मुझे शॉक कर दिया कि क्यों बेफालतू में मैं ब्रोकरिंग कर रहा हूँ है, या फिर बस बहुत ही लो मार्जिन पे मैं काम कर रहा हूँ। तो फिर मैंने 7 से 8 दिन लगा दिया इसको सीखने में, समझने में, और फाइनली मैंने 7 से 8 दिनों में उस चीज को पूरी तरीके से सीख लिया और समझ लिया। और फिर मैंने प्रोजेक्ट खुद उठाने शुरू किए। उस टाइम पर मैंने काफी प्रोजेक्ट किए, बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत अलग अलग तरीके के उस टाइम पर चलते थे। उसके बाद जो है ये चलते चलते इसके साथ साथ क्रिप्टो करेंसी मार्केट, अगर बिटकॉइन वगैरह के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। आज तो बिटकॉइन की वैल्यू बहुत ज्यादा है, मोर देन 30 लाख, या आई डोंट नो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। बट जिस टाइम पर मैंने स्टार्ट किया उस टाइम पर इसका कीमत था 2 से 2.5 लाख रुपए। उस टाइम पर बिटकॉइन में भी मेरा माइंड है गया, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, इन चीजों में। और यू कांट बिलीव, और शायद सुनकर भरोसा नहीं होगा, मैंने 5 से 6 महीने, ये बात है जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, बीसीए करते करते, उस टाइम पर मैंने 5 से 6 महीने में जीरो इन्वेस्टमेंट करके क्रिप्टो करेंसी में मोर देन 70 to 80 लाख रुपीज का टोटल नेटवर्थ कर लिया था। बट एकाएक कुछ फैमिली इशू हुआ, और साथ में मुझे ऑल ऑफ सडन सब कुछ छोड़कर निकलना पड़ गया। और उसके बाद वो 7 से 10 दिन में अपने गांव में था, जहां मैं अभी हूँ, जिस जगह पर हूँ, जहाँ हूँ। तो उस टाइम पर 7 से 8 दिन मेरे लिए बहुत क्रिटिकल रहा। उस टाइम पर एकाएक मार्केट क्रैश कर गया, और वो सारा का सारा अमाउंट मेरा लॉस हो गया। इसके बाद मेरे और कुछ कुछ फंड थे प्रोजेक्ट वगैरह से, वो सब समझिए कि मेरा एक तरह से करियर क्रैश कर गया, चौपट सा हो गया। और मुझे समझ नहीं आया कि आगे करूं तो करूं क्या।
फिर मैंने कुछ टाइम का ब्रेक लिया और उसके बाद फिर वापस से मैं रुका नहीं। कुछ टाइम ब्रेक लेने के बाद लगा कि ब्रेक लेने से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ और करना चाहिए। तो फिर मैंने वापस से यूट्यूब के ऊपर ही काम करना शुरू किया। और फिर मैंने देखा कि आज मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं, इंपोर्टर्स हैं, होलसेलर्स हैं, जो अपने प्रोडक्ट को की एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग चाहते हैं। और बहुत सारे पर्सन हैं जो समझिए कि उत्तर प्रदेश के किसी गांव या फिर असम के किसी डिस्ट्रिक्ट से हैं और उनको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ नया काम करना है। और समझिए कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है वहां पर, और उनके लिए पॉसिबल भी नहीं है कि वो अलग अलग जगह, समझिए कि गुजरात टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब, या फिर आप बात करें राजस्थान, या फिर आप किसी और जगह की, उनके लिए पॉसिबल नहीं है कम टाइम में वो सब जगह विजिट कर सके। तो मैंने एक तरह से सोशल मीडिया के जरिए जो मेरे क्लाइंट्स थे उनको, और साथ में जो एंड कस्टमर थे जो कोई बिजनेस करना चाहते, दोनों के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करना शुरू किया। और मैंने देखा कि ये काम इतना ज्यादा हिट हो गया उस टाइम पर। इस फील्ड में 3 से 4 लोग ही थे, उसमें से मैं एक पर्सन था। और इस चीज ने मुझे 2 साल में, 3 साल में अगर मैं बात करूं पिछले, तो इस काम की वजह से मैंने इंडिया के 1000 प्लस अलग अलग जगह पर घूम चुका हूं। साथ में आज शायद ही कोई सा स्टेट या फिर कोई हिल स्टेशन या फिर कोई ऐसा जगह बचा होगा जहां मैंने ट्रैवल नहीं करी है। उसके बाद जब 2020 का टाइम आया, जब कोविड हुआ और बाकी चीजें हुई, तो ट्रैवल रुक गया, मेरा काम एकाएक ऑल ऑफ सडन जो है बहुत ज्यादा गैप आ गया। तो उस टाइम पर लगा कि अब मैं क्या करूं। तो उस टाइम पर मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, अपन खुद का एक स्टार्टअप डालते हैं, क्योंकि अपने को आइडिया लग चुका था कि मार्केटिंग कैसे होता है, अपने को पता चल चुका था कस्टमर क्या देखना चाहते हैं, और साथ में अपने को पता चल चुका था कि इंडिया में अगर मुझे कुछ प्रोडक्ट मंगाना है, लेना है, तो नेटवर्क मेरा बिल्ड हो चुका था। तो मैंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, और जो है 3 से 4 लोग थे हम लोग, छोटा सा एक स्पेस था वहां से। और हम लोगों ने एक डिजिटल कोर्स सेल करना शुरू किया। और उसके बाद करते 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 ये जुलाई 2020 की बात है जब स्टार्टिंग हुई थी। और उसके बाद पिछले 2 साल में हम लोगों ने उसी काम से एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से हम लोगों ने काम को शुरू किया था। आज की डेट में जो है मतलब हमारी 3 कंपनीज है, और साथ में 20 प्लस डिफरेंट ब्रांड्स हैं। इसके अलावा आज 150 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा आज जो है हमारे 5 कंपनी ऑपरेटेड ब्रांच हैं। चाहे वो बात करें आप नेपाल में, चाहे फिर पटना बिहार हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे जामनगर गुजरात हो। इसके अलावा अभी रांची और साथ में भोपाल या फिर सूरत, इन दोनों में से किसी एक जगह अभी दिसंबर में हम से पहले हमारा ब्रांच खुलने वाला है। इसके अलावा नेपालगंज नेपाल में भी हमारा कंपनी ऑपरेटेड ब्रांच है। इसके अलावा 50 प्लस ब्रांचेस हमारे आज पूरे इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि फीफो बेस्ड हैं, फ्रेंचाइजी इन्वेस्टेड एंड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। इसके अलावा आज हम लोग हर कंट्री, चाहे आप सिंगापुर लें, चाहे आप दुबई लें, चाहे आप मलेशिया जाएं, चाहे आप बांग्लादेश जाएं, चाहे नेपाल जाएं, चाहे भूटान जाएं, सभी जगह पे हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है एक्सपोर्ट होते हैं। आज जहां हम लोगों ने एक प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था, आज आप जाएं व्हीकल्स में, ऑटोमोबाइल्स में, चाहे आप जाएं जो अपैरल्स में, फैशन इंडस्ट्री में, हम इन हाउस प्रिंटिंग करते हैं, इन हाउस हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। और आज इंडिया के बड़े से बड़े होलसेलर को हम लोग प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। आप जाएं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो वो हम लोग करते हैं। और इतना ही नहीं, आज जो है मैं कॉलेज टाइम में जो है ना ही एक एवरेज स्टूडेंट था मैं, मुझे नहीं लगा था कि कभी ऐसा होगा कि मैं आप लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट करूंगा। आप सोच के देखिए कि उस टाइम एक वो टाइम था और आज एक टाइम है कि मैंने आज हमारे लिए आज वर्ल्ड वाइड अलग अलग जगह से डेवलपर्स काम करते हैं, और साथ में आज ऑल ओवर वर्ल्ड हम लोग अपने प्रोडक्ट्स से हमारे कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ में कहीं ना कहीं जो है सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ हम लोग कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो ये कुछ छोटा सा ब्रीफ था। एट द एंड मैं एक बात कहूंगा, वो ये कि आप सभी लोग जो अभी कॉलेज में है या कुछ ना कुछ फील्ड से हैं, वर्किंग हैं, जो लोग चाहते हैं कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूं बट उनको नहीं पता कि क्या करना है, कैसे करना है, तो 2 चीज सुनिए आप। पहली बात आपने सुना होगा, इंडिया में 10 में से 9 बिजनेस फेल हो जाते हैं। केवल एक ही होता है जो किसी तरीके से चलता है या फिर एक हाइट तक पहुंचता है, बाकी 9 फेल हो जाते हैं। ये बहुत कॉमन सी बात है, अगर आप स्टडी भी करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। एक छोटी सी स्टोरी है इसके ऊपर, इसके बाद मैं एंड करूंगा, मैंने बहुत टाइम ले लिया है। जब एक बच्चा पैदा होता है
और जब तक वो अपने कदमों पर चलना शुरू करता है, बार बार गिरता है, रोता है, बीमार होता है, तकलीफ होती है, एक माँ होती है जो हमेशा उसके साथ होती है और उसको हर परेशानी से, हर तकलीफ से बचाती है। उसी तरीके से जब आप कोई अपना एक काम शुरू करते हैं, जब आप कोई अपना छोटा सा काम शुरू करते हैं, तो हम शुरू में ही सोच लेते हैं, अब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने एक स्टार्टअप डाला, मैंने एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू किया, अब तो लाखों करोड़ों आना शुरू हो जाएगा, घर, कार, बंगला, XYZ सब कुछ होगा। लेकिन ध्यान रखिए, जिस तरह आपका बिजनेस ठीक उसी बच्चे की तरह है जो बड़े होने के बाद अपने माँ के सारे ख्वाहिशें पूरी करता है, बट बड़े होने के बाद बचपन में नहीं। That's all from my side. Thank you so much everyone for listening me. और आपकी जो भी क्वेश्चंस हो गए, I'm ready to answer all these questions. Over to you, Ritika ma'am. Thank you so much. Thank you, Prem. It's always good to hear you speak. Proud of your accomplishments. Now I would like to welcome Samarth Shukla. He was a wonderful music composer. I recalled that he and his friend created a video for Tech Samaro, the IT Fest. Samarth, please share your journey with the students. Hello, ma'am. Am I audible? Yes, Samarth, you're audible. Okay. So I would like to take this time to thank Ritika ma'am, Mukta ma'am, and the HOD ma'am to invite me to guide. And it is like guidance is a word which really overwhelms me. I mean, मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से कि दूसरों के दिखाए रास्तों पर चलने में उतना मजा नहीं आता जितना खुद के बनाए रास्तों में चलने में मजा आता है। तो अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन BCA। मैं 2017 से 2020 के बैच में था। देन आई ड्रॉप द ईयर बिकॉज मैंने अपने आप को कभी भी ओवर अचीवर नहीं समझा। Or listening to all the people talk, I am really proud and I am really happy to know them, and it makes me very happy to listen to their achievements. But I have never been an overachiever, so it is going to be a peer-to-peer talk. Consider me as a friend, and I may look like I am dressed formally and all, but consider me as a friend. And yeah, so currently I am just enrolled in PG in English journalism in IIMC, Indian Institute of Mass Communication. And yeah, I will just keep it very short, and I will just try to answer everything, the questions which may come from anybody in the further session. Thank you, ma'am. Thank you, Samarth, for a musical journey. Now let me call Puja Sharma, an intelligent student with a beautiful heart, who believes in serving the poor and the needy. She had been associated with NGOs and has always been a part of various social causes during her stay at Trinity. Over to you, Puja. Thanks a lot, ma'am, and thank you for considering me to guide the students. So, about me, when I stepped into the college, I didn't know what to do. First of all, I opted for BCA. I didn't know what my plan was. So I remember there was some auditions going on. So I gave an audition for some society, like dramatic society, if you're aware of Shaurya. So for 2 years, I didn't attend a class. I used to get scolded by teachers, even from Ritika ma'am and other also. Yeah, I remember that. I used to get late at class. The moment I get time, I used to attend, but also I get to used to get late there. So yeah, for 2 years I didn't attend anything, but the third year I wanted to go for something different. Since 2 years was fantastic, since I got to learn
a different thing through theater. It helped me in my coordination, in my confidence, communication, leadership, and there are many things. Since I believe that wherever you work, wherever you are, you get to learn something. Even if you are sitting ideally, your mind is restless. You think of something, that there is nothing that you can think of. So, sky's the limit. So mind is there. So when I actually get to attend classes, like in third year, that is also for 6 months, since COVID was there and made it all worse. So I attended college for BCA for 6 months. I got to learn everything there. I even made a website by my own. I didn't know how to do all this, since I used to see YouTube videos and seek advices from my teachers and other things. I remember I used to ask Mukta ma'am about different things like crypto and cybersecurity and data analytics and other things which was trending, which I because I didn't know what to go for. I was very novice in this, but I wanted to go for it, since I believe that I'm very good with practical things and IT things. So I decided in third year that I should go for it. Yeah. So I was placed at Infosys through college itself. I remember my interview, I mentioned very little things about the IT sector that I've done till now. Since I, in the summer internship, I interned, I remember IIT Delhi for content writing, not for some IT specific domain, but for content writing, where I got to learn about SEO and other management things. Because I'm an writing enthusiast. I write blogs, I write poetry, write scripts and all. So I didn't attend and do anything like related to IT. What I mean. So when I got placed at it, I first of all I didn't believe that I am placed at it, being a this novice person who hasn't done anything in IT and attended classes since 2 years. I wanted to just go for it and wanted to try it, like how this interview and exams works. So in first go, the Infosys was the only company that I gave my interview to. So I got selected. I was very happy, but I didn't know how it will go on later. So for past 1 year, I'm working at it, and as an operations executive, along with the testing team who is working on agile currently. It is a methodology, if whoever don't know about it. So it is the project based on US clients, and we are working for it. And for other things, and the other things that I can give my answer to is, I hope I will be able to utilize your time to provide you useful solutions. So thank you. I think this is 11. And thank you, Pooja, for making us know about your journey. Now we move forward to the question and answer session, which we all were waiting for. I'm sure it will benefit the current batches to get acquainted with different fields of IT. I would like to ask the panel members the questions raised by our current batch students. My first question is from Ms. Puja Sharma. Pooja, kindly tell, after graduation, which is more fruitful, job or higher education? For me, I always wanted to go for a job, since I've decided already that
after 3 years of this learning, I want to put this, theoretical knowledge into some actions. So I preferred job, and I've already decided that I will gain some experience first, then I will choose some higher education. Since I didn't know, as I said, what to choose and what should I go for. So I wanted to know what I'm good at, since what specific domain I should go for. Be it anything in cybersecurity or data analytics, and anything that I knew at that time. So for me, job would be suitable, and will make you to know about what you are good at, and the area you should work on. So if you find one and gets it and get some experience for same, you will know that if is this your thing or not. So for me, higher education would be saved for later, and I would get to know what area I need to study more or focus more, since I'm experiencing it in now. So I think job or internship and startups or various companies were there outside. So you should gain more experience first, learn first, then put everything into actions. Since I didn't know, and I didn't want to go for immediately into some higher education, since I'm learning it for 3 years, again for 2 years I'm learning it for advanced level, but I want to put my this knowledge that I've learned so far into action. So I chose to do job first. So yeah, thank you. Thank you, Pooja. My next question is for Siddhant. Siddhant, which college is best for the students to opt for MCA? Okay, so to be very honest, it depends upon you, because we all know that MCA karna is very zaruri, right? So at some point, if you are able to like crack the exam for the best college, you are good to go. But point is कि सब लोग नहीं होते कि जो टॉप 100 में आ जाए, टॉप 50 में आ जाए, राइट? सो आप उस कॉलेज में जाके कैसे आप परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे आप अपने आप को हाईलाइट कर पा रहे हैं, वो डिपेंड करता है, राइट? सो स्टिल एक क्वेश्चन आता है कि आई हैव एन ऑप्शन, आई हैव 2 or 3 ऑप्शंस कि मैं कौन सा कॉलेज में ऑप्ट करूं. सो आपने बस यही चेक करना है कि उस कॉलेज की वेबसाइट ऑब्वियसली होगी, तो उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे लास्ट प्लेसमेंट्स कितना और कैसा रहा है स्टूडेंट्स का, तो वो चेक करो. इफ यू फाइंड कि हाँ इस कॉलेज में ज्यादा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं या इस कॉलेज में कम प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज है, यू कैन जज द कॉलेज प्लेसमेंट क्राइटेरिया ऑन दैट थिंग. एंड सेकेंडली, इफ इन केस आपको ऐसा लगता है कि आई एम गेटिंग एडमिशन इन सम कॉलेज जहाँ पे प्लेसमेंट लास्ट ईयर्स की उनको ठीक दिख नहीं रही है, कुछ कम बच्चे ही हो रहे हैं वहां से प्लेस, बट दैट डजंट मीन कि आप वहां से प्लेस नहीं होगे, राइट? सो it just not depends upon the college, it depends upon your caliber कि आप कितना कर सकते हो, आपकी capabilities कितनी है, आपकी coding level कितना है. So if you are like planning to go for the development and engineering type of things, so you can go for and you should go for MCA. And MCA आपको मतलब करियर ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको, like if you got selected for the development purposes, and after 2 to 3 years आपकी प्रमोशन का जब टाइम आएगा, उस टाइम पे वो आपको सिलेक्ट करेंगे या एक दूसरे बंदे को सिलेक्ट करेंगे जिसका सेम एक्सपीरियंस है बट ही हैज डन MCA और मे बी MTech. तो वहां पे उसका एक प्लस पॉइंट होगा. सो हायर एजुकेशन क्यों करी और उसका क्या रीजन था, तो उसका रीजन यही होगा, और कॉलेज का रीजन भी यही होगा हमारा कि हम उस कॉलेज को कैसे, मतलब उसकी प्लेसमेंट क्राइटेरियाज कैसे हैं. तो आप जिस कॉलेज का ज्यादा प्लेसमेंट क्राइटेरिया सही होगा आप उसको ऑप्ट करो. एंड इफ इन केस अगर आपको कॉलेज वैसा नहीं मिल पाता है तो डोंट वरी अबाउट दैट. मतलब आपको स्टैंड आउट करना है, एक झुंड में से स्टैंड आउट कर पाओगे तभी आप प्लेस हो पाओगे. ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. Okay, Siddhant, thank you. My next question is for Anupama.
If I'm interested in social media marketing, how to get into it after BCA? Should I choose MBA to opt for social media marketing? It's a very good question. Thank you for this. First of all, there are two options available to get into this field. And since after the pandemic, it has become a very good career option. It's progressing every day. So there are two options to get into it. First is doing MBA. While you do MBA, you'll get a lot of ample opportunities in getting internship in different social media companies, social media marketing companies, and you will also get to learn a lot about it. There are a lot of subjects related to social media marketing. Apart from it, the other option is getting courses from Coursera or Udemy, any of these platforms, to get a social media course, and getting internship from Internshala. So these are different options available. But specifically, if you ask me about doing MBA to get into social media, I would not suggest you to do that, because MBA is not just about getting into social media marketing. MBA is a whole about being in a management field. So if you are interested to be an enthusiast manager in future, then only go for MBA. But if you are restricted to social media field, I would suggest you to do internships, do courses, so that you'll get ample opportunities. And in future, if you'll do internship, they will hire you full time on the basis of your performance. So that was my point of view. Thank you. Okay, Anupama, thank you. And my next question is for Rahul. How can I make myself stand out from the people interviewed? Rahul, am I audible? Ma'am, I guess someone is raising their hands. Can we take questions right now, or should we take them later? No, I'm taking questions. Rahul? Okay, moving to the next question. Kindly tell the process of startup, Prem. थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि स्टार्टअप का प्रोसेस क्या है, और ये मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं या फिर जो भी लोग मुझसे मिलते हैं, अधिकतर लोगों का ये सवाल रहता है। देखिए, स्टार्टअप का सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि स्टार्टअप स्टार्ट तो करना है, बट कैसे करना है, किस चीज से रिलेटेड करना है, आइडिया क्या है आपका, वो पहले इंपॉर्टेंट है। और बहुत लोग ऐसे हैं जो अलग अलग आइडियाज ढूंढते हैं कि XYZ की इस प्रोडक्ट में जाऊं, क्या इस तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू किया। देखिए, आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है, जो आपको अच्छा लगता है, केवल वो मैटर करता है। अगर आपको लग रहा है कि यू आर गुड इन सोशल मीडिया, जो है अभी अगर मैं आपको बताऊं, अप्रॉक्स 1000+ इंटरव्यूज मैंने अलग अलग कैंडिडेट के लिए हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जिनसे मैं सीधा पूछता हूँ कि क्या आप फेसबुक यूज करते हैं, आप फेसबुक यूज करते हैं तो कितनी बार करते हैं, क्या करते हैं, और वो शॉक कर जाते हैं कि ऐसा क्यों पूछा जा रहा है मुझसे। आज के टाइम में स्टार्टअप का मतलब मेरे अकॉर्डिंग पूरी तरीके से बदल गया है। स्टार्टअप के लिए आप देखिए, आपके पास जो आइडिया है, आपको जो लग रहा है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, इसमें मेरा इंटरेस्ट है, नो मैटर किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड होता नहीं है, और ना ही हो सकता है उस जैसे डिमांड क्रिएट करना पड़ता है, उसी तरीके से आपका जो आइडिया है वो पूरी तरीके से आपका आइडिया है। आप देखिए कि आप उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड रिजल्ट के बारे में मत सोचें, आप बस ये सोचें कि आपका जो आइडिया है उसको आप इम्प्लीमेंट किस तरीके से करेंगे। जिस तरीके से हम अगर मुझे समझिए कि दिल्ली से जयपुर जाना है, डिस्टेंस है 250 किलोमीटर, राइट, और मैं कार से जा रहा हूँ, तो मेरी कार की जो LED लाइट है
जो मेरे कार में लाइट है, उस लाइट से बहुत मुश्किल से अगर मैं देखूंगा तो 100 मीटर या 200 मीटर, अगर मैंने 2 लाइट और लगा दिया तो 500 मीटर। जिस तरीके से एक कार में 500 मीटर लाइट डिस्टेंस हम लाइट से देख पाते हैं, और वो 500 मीटर को देखते देखते हम 250 किलोमीटर कब पहुंच जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। और जब हम कार लेकर निकलते हैं तो हमें ये भी नहीं सोचना पड़ता कि 250 किलोमीटर रोड पे लाइट होगा या नहीं होगा। हमें ये कॉन्फिडेंट होता है कि हमारे गाड़ी में जो 300 मीटर या 200 मीटर या 100 मीटर की डिस्टेंस जो विजिबिलिटी है लाइट से, उस लाइट के भरोसे मैं 250 किलोमीटर का सफर तय कर लूंगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी गाड़ी में वो 100-200 मीटर की लाइट कितनी पावरफुल है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मेरा यही सजेशन है। और बाकी जैसा आपको सही लगे, आपका आइडिया है आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है, पहला स्टेप आप रखें, दूसरा स्टेप आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। और जो है बाकी आप आजकल चीजें हर जगह अवेलेबल है। यूट्यूब को मैं सबसे बड़ा अपने खुद का स्टडी का एक सोर्स मानता हूं, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद जो है मैंने अधिकतर समय यूट्यूब को दिया। हालांकि बुक्स वगैरह भी मैं पढ़ता हूं, लेकिन यूट्यूब वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपसे फ्री में सारे इंफॉर्मेशन, सारे कंटेंट आपको बड़े से बड़े, आप चाहे आईएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना हो, चाहे डेवलपमेंट सीखना हो, चाहे सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखना हो, चाहे कुछ भी सीखना हो, आज यूट्यूब पर हर चीज अवेलेबल है। वहां से आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। और जो है आपका आई होप कि मैंने शायद आप मुझसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे, और जो मैं बताना चाह रहा था वो मैंने समझाया है। बाकी आपके जो भी आगे क्वेश्चन होंगे, आई एम रेडी टू आंसर। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। Thank you, Prem. Okay, now my question is for Rahul Sharma. How can I make myself stand out from the people interviewed? Over to you, Rahul. Okay. Thanks, ma'am. Thanks for the question. And sorry for the previous chance. I was not able to unmute myself. I don't know why. No Okay. issue. Now, coming back to the questions about the interviews. So let's talk about some interview process. So what is an interview, how it happens? And see, this is basically a thing which makes a person very nervous when they are asked to be get interviewed. So right now, I will be talking with my complete experience as a panelist in the Wipro as well, to take the interviews. And myself, I have given a lots of interviews and I have taken a lots of interviews. So the few things which I have made myself, like how we can process with this thing is like, so when we start an interview, so if I'm talking about a complete IT interview, so there are 2 rounds with that. So if you are a fresher, it would be your basic ability test, right? In which you have to do some logical thinking, those things and that. So those you can just directly learn from some books. There are good books available, and through the internet, you have to crack on that your own. Next, coming on to the technical round. So there are a couple of technical rounds. So one is the online technical round, in which what happens is like you are given a piece of code, or maybe a 2 pieces of code that you have to just run. So if you have run that, no one is going to ask you how you did that. But if you grow generally, and if you go from one company to another company, so the kind of interviews which you can even get in internships as well, like a person will be standing in or sitting in front of you, and they will be giving you a question. Okay, so this is a question, you have to solve that. On that part, what you have to do is, according to me, the basic thing is ask a repeated question first. Like you should be very clear about what the question is being asked. So for example, in my experience, there is one a question that I ask everyone while giving a coding interview round, is that uh, find the index of the second largest element in an array. Okay. And I have seen people making 90% of the mistake. They think, okay, that's a very small question, very easy question. They start making and they give me a result about the second largest element. Okay. Not in the index of the second largest element. I'm sorry. I'll reiterate my question. So instead of finding the index, they find the second largest or the smallest element. So this is something you should avoid. Listen first very carefully what the interview is asking you. Another thing is, talking about the HR rounds, is the first thing is research about the company. So if you're going to give an interview in an internship, for an internship or for a company, research about that company. When I was giving my interview for the Wipro, the first question that HR asked me is, what is the full form of Wipro? And I was completely blank. I blanked out. Okay, what is this? Even the Wipro has a full form. So Google. The first thing is like, whenever you're going to sit for any interview or something, Google about that company, research about that company. What is this company? How
how it has been established, what it has faced, and how big is this company. Another one is that be confident, as everyone will say you, but being confident does not mean that you have to be overconfident. So never underestimate the one person sitting on the opposite side of the desk. Any question he's going to ask you, you either, if you know it, answer that. If you don't, just leave it. Don't try to uh, go around the bushes and try to give the answer. It's not a college viva, to be honest. It is your interview question, because the interview knows everything he's going to ask. They have the answers previously in their hand. They are not going to ask you anything which they don't know. So make sure that anything that you answer, you know about that, and that's it. Another thing is, if you are lagging in some questions, right? So for example, the coding question, okay, so you are writing a code, keep explaining that. So this is one practice that people avoid. So while they are writing something, they will not talk to the interviewer. So this, what happens in this process is the the person on the opposite side loses interest in you. Okay, that's fine. So sometimes when we code, we just get involved in that code. So keep iterating what you are doing. Tell them about your logical thinking. The person on the opposite side leads 50% of your technical knowledge, 50% of your enthusiasm. Like how much you are enthusiastic to solve this problem, how much you are dedicated and committed to solve the problem that they are giving. Even they try to give the hardest problem that they can. So if you keep on talking to them and talk about your thought process, what you are thinking, how you are thinking, this helps a lot in an interview. And another thing is your resume. The one thing that before you go to an interview, the thing that comes in the hand of an interviewee is your resume. So there is a simple formula for resume that I keep for myself is 2S, short and smart. Keep your resume short and keep it smart. Any achievements that you have done, put it inside that. Even apart from the studies, if you are into some like from the college, the theater background, if you have a sports background, so add these things in your resume. This highlights your resume. This doesn't mean that you are just looking for that one position. It is something you are flexible in doing everything that you can inside that. So you have to just present yourself in a piece of two papers. So resume, get help to make resume. So people nowadays, or I have seen, so they just make resume, they will go to Word and they will just make resume. Okay, I am this much objective, all these things, perfectly fine. But what you are writing, the content over there, that should be completely impressive. So ask help, ask your mentors, keep one mentor. Okay, so this, take one guy, anyone that take him as your mentor, ask them. So the persons who have gone through these things, they can help you in building your resume. Last but not the least is the final thing. Okay, if you're able to crack the interview, good, nice. But if you don't get disheartened. Okay, there are chances. I have myself failed in lot of interviews. That's how I have learned. I'll just share you one good example with that from my personal experience. So after almost 2.5 years in a Wipro, I needed to switch a project. So while I was looking for a project, I just went out for an interview unprepared. I was bashed in that interview. So that interview was supposed to be 1 hour. That person sent me home in 15 to 20 minutes. And the feedback that I got was a very negative feedback, zero technical knowledge, zero communication skills, all those things. This is one part. Once you fail, you will trigger yourself. No, only I can fail once, I'll not fail twice. Then I started preparing myself. The next interview, I got selected. I am now leading that team. I started that team with a 2%. Now that team I have, it is consisting of 21 people, out of which around 7 to 8 people report directly under to me. So this is something, don't get failures. If you get failed, that's okay. That is very much okay. Just go with these things. So yeah, ma'am. So this is, I think I was helpful answering this question. So thank you. Thank you, Rahul. Okay. Samarth, my next question is for you. Can we move to some other domain after completing BCA? Okay, thank you for the question, ma'am. But first of all, मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरी स्क्रीन पे क्लास दिख रही है, जिसमें मुझे it just reminds me of myself. Siddhant would know that we used to have these seminars and we used to sit and like chat about anything in the world. And और हमने कभी ऐसा सेमिनार्स में किसी को भी
सुना नहीं ज्यादा और किसी को भी लिया नहीं, क्योंकि इतना गाइडेंस किसी और की गाइडेंस से, किसी और के अचीवमेंट सुनने से मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई फर्क पड़ता है उस चीज में. यू मेक योर ओन पाथ. सो अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं बीसीए, मुझे कोडिंग इतनी कुछ समझ नहीं आती थी कभी भी. सो मैं तो ज्यादातर क्लास बंक करता था और काफी इधर उधर ही रहता था. थर्ड ईयर में मैंने काफी क्लासेस अटेंड करी हैं, मगर फर्स्ट सेकंड ईयर में नहीं करी होंगी. एंड मैं आई वुड आई वुड जस्ट से दैट आई एम मिसिंग माय फ्रेंड विवेक हियर. ही हैड सम अदर वर्क, सो ही कुडंट जॉइन. तो मैं और विवेक, मेरा जो फ्रेंड है, तो हम लोग दूसरी क्लासेस में बैठ के हम म्यूजिक बनाया करते थे. और teachers used to see us and they would like ignore us that yeah, they are doing something. So that is how you do things in college. And ऐसा होता है कि ज्यादातर चीजें कभी सीरियस नहीं लगती हैं जब आप कॉलेज में होते हो, लेकिन जब आप कॉलेज के बाहर जाते हो तब आपको समझ में आता है कि दैट दिस इज द रियल वर्ल्ड एंड नाउ यू विल हैव टू हसल फॉर इट, नाउ यू विल हैव टू फाइट फॉर इट. सो मुझे हमेशा लिखना बहुत अच्छा लगता था. मेरी पूरी फ्रेंडशिप बीजेएमसी में हुआ करती थी. बीसीए को छोड़ के मैं बीजेएमसी में बैठता था ज्यादातर. तो ये सब होता था. और उसके बाद अबाउट द क्वेश्चन दैट इफ यू कैन स्विच योर फील्ड एंड ऑल, सो यस यू कैन. एंड whenever you choose, it is never late. And it is like आप अभी बीसीए में हो तो आपको ये अपने आप से पूछना चाहिए कि आप बीसीए में हो क्यों. I mean, are you really interested in coding and in softwares? If you are, then it is well and good. And it is a field of vivid opportunities. I mean, there is no limit. But if your answer is कि नहीं, मजा नहीं आता है इतना, क्लासेस में मजा नहीं आ रहा है, लैब में आप प्रैक्टिकल करने जा रहे हो, मजा नहीं आ रहा है, now it makes you and me similar. क्योंकि अभी मुझे ज्यादा टाइम पास आउट हुए नहीं हुआ, मुझे 2 साल पास आउट हुए हुआ है. और मैं जब अपना टाइम मुझे याद आता है तो मैं भी कुछ ऐसे ही करता था, ऐसे ही होता था कि मुझे क्लासेस में ज्यादा इतना मजा नहीं आता था, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा होता था कि क्या हो रहा है. आई वाज नेवर इंटरेस्टेड इन कोडिंग एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड थिंग्स. सो yeah, as I mentioned earlier, that I dropped an year and then I prepared myself. I figured out that what should I do next. So I was really interested in BJMC all the time. कि मैं वहीं BJMC में घुसा रहता था, मेरे friends BJMC में थे सारे. So I chose that field because I just wanted to be around some people who are really creative. Technical people are also creative, but my creative is something different. The people who like art, writing, and these kind of things, films. So मैंने एक साल ड्रॉप करा और उसके बाद प्रिपेयर करा अपने आप को. तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में मैंने पेपर दिया और right now I am pursuing English journalism from Indian Institute of Mass Communication. So yeah, my answer would be yes, that you can switch your field anytime you like, anytime you want. क्योंकि at the end of the day आप हो जो आप खुद को बना रहे हो, कोई और नहीं बनाएगा आपको. ना ही जब आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाओगे जहां आप चेंज नहीं कर सकते चीजें, वहां रिग्रेट नहीं होना चाहिए कभी भी जिंदगी में. तो इससे अच्छा है कि आप अर्ली स्टेज में ही खुद को समझने की कोशिश करो और स्विच करो अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा. तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप ग्रेजुएशन आपने इसमें किया है तो आप इसी में जाओ. इवन इफ यू डोंट मेक अ गुड इंजीनियर, इवन इफ यू डोंट मेक अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगर ऐसा होता है कि अगर आप अच्छे नहीं हो किसी चीज में तो आप उस फील्ड को कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पाओगे. You can earn bread and butter, of course. You can earn your bread and butter, of course. But if you are not able to contribute much to the field, then it is of no use, right? So that would be my answer. Thank you, Ritika ma'am. Thank you, Samant. My Puja, next question is for you.
Is your industry growing? And what is the outlook for the future? Yes, thank you, ma'am, for the question. About my industry, as I mentioned, that I'm working along with testing team who are working on agile methodology. DevOps is there also. So I would explain a bit about it. Agile is something like it is not a technology and a language, but a method that we use in our project. Like we, if there are n number of data, n number of things that we need to sort, arrange, and uh, in particular manner. So we divide the things. We use iterative approach to manage the project, to lesser our efforts, to lesser our time, to make it more predictable and useful to our clients and for us as well. So it is a method that we apply in our project to lesser our human effort, basically. That we don't need to do certain amount of work in the 10 hours of work in 12 hours or in 24 to 48 hours. It gets done in a chosen number of hours in less than 10 hours, and whatever we plan it to get done. So yeah, it is based on this, and I would say that it is very trending and it is going very well, and many projects that I just got to know that agile and DevOps are getting much uh, good exposure, that every project use this method and apply it in their work and projects as well. So I would say it is going very well. Like industry is very fruitful when they are using these methods, and outlook for it would be, I would say I find it very creative. Like people are getting, like operation teams are there, testing teams are there, development teams are there. They are doing their specific work within the specific number of time as mentioned in every sprint. Like sprint is 10 to 15 days working, like planned days that we need to work a certain amount of thing in these particular time. So yeah, it is going very well, and I would say you should all read about it for a bit. Like DevOps is has DevOps has scope in, if you go for cloud computing and any other things, like you will find DevOps there, and used to work on many tools and technologies there, and it will enhance your growth for sure. So it is very it is going very good. Yeah. Thank you. Okay, Pooja. Next question is for Siddhant. I want to pursue my career in web development. So I want to know which kind of internships will benefit me. Okay, so first of all, I just want to know that what type of development do you want to work in? That is like अगर आपको web development में जाना है, तो we have front end development, back end, and we have full stack developers also. So I prefer कि if you are doing good in the development part and in the front end development, so I will say that थोड़ा बैकएंड के बारे में भी सीख लो, बिकॉज कंपनीज जो हैं आजकल वो फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर पर्टिकुलरली कम ढूंढती हैं, वो दे सर्च फॉर दी फुल स्टैक डेवलपर्स। क्योंकि इसका रीजन ये है कि अगर कंपनी सिर्फ एक इंसान को पे करेगी, लाइक एक कंपनी है, मेरी कंपनी है, मेरे पास एक फ्रंट एंड डेवलपर है, एक बैक एंड डेवलपर है, मेरे को 6 लाख रुपए उसको भी देने हैं और फ्रंट एंड डेवलपर को मेरे को 6 लाख रुपए बैक एंड डेवलपर को भी देने हैं, तो मेरे को 12 लाख पड़ेगा पर annum। बट इफ इन केस मेरे पास एक फुल स्टैक डेवलपर है, तो वो उसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन होगा कि मैं उसको 10 लाख रुपए दे दूं एंड मैं उससे बैक एंड फ्रंट एंड दोनों का काम करा लूं।
तो कंपनीज आजकल अपना कॉस्ट बचाने के चक्कर में फुल स्टैक डेवलपर्स को ज्यादा सर्च करती है कि फुल स्टैक डेवलपर मिल जाए तो ज्यादा बेटर है। अगर किसी फॉर्च्यून 500 कंपनीज की बात करें तो वो हाँ वहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट का पर्टिकुलर रोल हो सकता है बिकॉज दे डोंट हैव एनी बजट टाइप ऑफ सिस्टम। बट yes, being a full stack, if you want to be a full stack developer or a backend developer, I will suggest you to be a full stack developer because उसमें ज्यादा opportunities है. Secondly, what was the next part of the question, ma'am? Says we want to know that if we can do any kind of internships that will benefit them. Okay, so fine. सी मेरे को भी डेवलपमेंट एरिया में ही जाना था, मेरे को डेवलपमेंट में ही जाना था। सो आई हैव अ विजन कि मेरे को ऐप डेवलपमेंट या फिर एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाना था। सो उसमें क्या था कि मैंने जब मैं ट्रिनिटी में था, तो जब हमारा अबाउट सेकेंड ईयर आई थिंक जब एंड अप हुआ था, तो वहाँ पे वी हैव टू डू सम इंटर्नशिप। सो मेरे को इंग्लू के बारे में पता चला। आई गॉट द इंटर्नशिप फ्रॉम द कॉलेज इटसेल्फ एंड मैंने इंग्लू में एज अ वेब डेवलपर काम किया फॉर 2 to 3 months मे बी। एंड आफ्टर वर्किंग इन द वेब डेवलपमेंट एरिया आई गॉट टू नो दैट ये मोस्टली यूआई से रिलेटेड है, क्योंकि जितना वेबसाइट का यूजर इंटरफेस जितना इजी होगा, इजी एक्सेसिबल होगा, इजी टू अंडरस्टैंड होगा, तो उतना ही लोग उसको यूज करेंगे और उतना ही आपकी वेबसाइट को अच्छा कहा जाएगा। सो द पॉइंट इज कि मेरे को लगा वो नहीं, मेरे लिए वो ठीक नहीं है। सो आई वॉज एक्सप्लोरिंग ऑल दी थिंग्स। सो इन आफ्टर दैट इंटर्नशिप मैंने एक एज अ कंटेंट डेवलपर भी मैंने एक इंटर्नशिप करी। सो उसका रीजन ये था कि मेरे को कंपनी एथिक्स के बारे में पता चलेगा। तो कंपनी एथिक्स में बारे में पता करना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको ये रहेगा कि आप इंटरव्यूज में आप एक ब्लंटली जवाब जब दोगे तो आप ब्लंटली जवाब नहीं दोगे, क्योंकि आप सोच समझ के दोगे जवाब, क्योंकि आपको पता चल जाएगा इफ यू हैव वर्कड इन अ कंपनी दैट देन यू नो कि सामने वाला पर्सन कैसे रिएक्ट करेगा मेरे आंसर को लेकर। सो वर्किंग एज अ कंटेंट डेवलपर मेरे को कंपनी एथिक्स के बारे में पता चला। आफ्टर दैट जब मैं डेटा साइंस की सर्टिफिकेशन कर रहा था, तब मैंने एज अ बिजनेस एनालिस्ट मैंने एक इंटर्नशिप करी थी द स्पार्क्स फाउंडेशन में। तो वहां पे मेरे को पता चला कि यहाँ पे डेटा साइंस का काम, बिजनेस एनालिस्ट का काम या फिर डेटा एनालिस्ट का काम कैसे एग्जैक्टली होता है। तो पॉइंट है कि जब मैं जिस कंपनी में लगा हूँ, तो उस कंपनी में जब मेरा इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यूअर ने मेरे को ये नहीं पूछा कि आपने मतलब ये नहीं बोला कि आपने अलग अलग फील्ड में इंटर्नशिप कर रखी है तो मैं आपको हायर नहीं करूंगा। उन्होंने मेरे को ये पूछा कि आपने ये इंटर्नशिप्स करी, ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के, तो उनका रीजन क्या था करने का। एंड इफ यू आर आंसरेबल टू दैट क्वेश्चन, तो आप कोई भी इंटर्नशिप करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। So I will say कि it's better to work to an internship in like development field. If in case अगर आपको नहीं मिल रही है development field में internship, you can go for another fields, not within the IT, but another fields also. So you can explain कि हाँ मेरे को उस टाइम तक एक internship development में नहीं मिली थी, so I just don't want to waste my time. So मैंने दूसरे fields में अप्लाई किया बिकॉज आई एम अ फ्रेशर एंड आई वांट टू बी वर्सेटाइल। बिकॉज कंपनी में एक प्रोजेक्ट 1.5 या 2 साल तक ही रहता है। 1.5 2 साल के बाद तुम भी उस कंपनी का एसेट रहोगे, वो मेन रहेगा। अगर एसेट रहोगे उस कंपनी के लिए, दैट मीन्स यू कैन वर्क इन डिफरेंट टीम्स ऑल्सो, राइट। सो 1.5 साल के बाद जब आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, तब कंपनी आपको निकाल भी सकती है। फाइन। तो जब आप वर्सेटाइल होगे तो आपको कंपनी सोचेगी, कंपनी को टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि इस एम्प्लॉय को हमें एक लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करना पड़ेगा कि मतलब ये प्रोजेक्ट तो हो गया, अब इसको इसके अलावा और कोई काम आता नहीं है, तो मैं इसको कहाँ पे डालूं। सेकेंडली 2 साल हो गए हैं, इसको मेरे को पे भी ज्यादा करना पड़ रहा है, एंड वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करता है। तो बीइंग अ वर्सेटाइल इन दिस इंडस्ट्री विल बी द लाइक मंत्र टू गो फॉरवर्ड एंड टू रीच न्यू हाइट्स। सो इंटर्नशिप कहीं पे भी करो, विद इन द आईटी फील्ड करो, एंड डेवलपमेंट में की मिले तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी मिले तो बी इन दिस आईटी फील्ड if you want to pursue. Okay, so that's all from my side now. Okay, Siddhant.
Next question is for you, Anupama. Due to the pandemic situation, we have not done any kind of offline internship. So I want to know if there is any kind of change in online or offline internship in terms of exposure. Oh, well, thank you. So, indeed, there are a lot of changes comparing online and offline internships. You'll get exposure when you'll have the offline internship because you'll get to meet the management, you'll get to meet your teammates, your colleagues. So you will develop an organizational structure, and you'll learn some ethics of the organization. But being in online scenario, it's very difficult for you to understand what a corporate culture is, and be that can be a hurdle for you in the future if you will work for any company. So yes, there are loopholes, but we can't do anything for that. We have these opportunities, and we have to make up best out of these opportunities what we have currently. So I'll suggest you to go for different internships so that you'll get different kind of experiences. And now, since now we are moving towards a hybrid structure, you can get a chance to get an offline internship as well. So don't stop. Even if you got placed with some companies, you still have a couple of months to join the company, and these couple of months can be utilized to get an offline internship that are available in the market. So yes, I would suggest you to go for offline internships because they are much worthier than the online ones. Okay, Anupama. Next question is for you, Rahul. From Yeah, where I can pick up Ritika, paid internships which I can add in my resume? yes, Okay. Ritika, before we move Yes, ma'am. forward, I would just like to add one thing here. What Samarth Shukla was talking about, that here I also have to say something, Yes, ma'am. that because this is no doubt that everyone has to decide their own path, and they have to choose their own way and methods and techniques. But at the same time, these sessions do help us and guide the students to perform better. If there are see, two people type of people are there. One who want to do something on their own, and they fail, and then they take new steps. This is what will happen with everyone. This will happen. Another is, that is, you have to learn from your failures. Then another is that you learn from other experience too. So since a human being is a social animal, they have to learn, and then they have to grow, because it is not possible that individually we can do anything. Because even if we are there, that is day to day life, if even if we are at home, we are not at all alone grooming ourselves. Or even if we are in at institution alone, we are not, the complete environment is supporting you to groom yourself. So this is an environment only which is being provided. And I think that with this environment, if the environment is like of this, that everyone is growing and someone is doing some course, someone is involved in, so these guiding sessions just help them, help one student to choose their career in a right manner, and they can make up their mind that way. So this is what I wanted to add here. Thank you, ma'am, for your insightful words. Okay, yes, Rahul, you may answer. From where I can pick up paid internships which I can add in my resume? Yeah, sure, ma'am. So see, according to me, internship is something like which helps us to get an overview of what is coming in next future. Okay, so this is to prepare us for the world we are going to enter further. So as I've seen my prestigious alumni is talking about their fields in which they are talking, but since I've been passionate about this field, IT industry, I have been stuck to the IT for like almost 5 years, 6 months now, and I intend to go further in this. Okay. So my answer would be strictly according to what a person of any interest, if they want to go into the IT.
So these answers would be strictly according to those IT industries. So if you want for the further assistance, I would be surely happy to help about that. But yeah, so even this answer would be strictly regarding to what I think and with my experience in the IT industry. So yeah, coming back to the main topic about the internship. So this is a very interesting phase actually, where we learn about the work culture, just not about the work. So if people think IT is all about the work and just like you have to code from 9 to 5 and you don't have an outside job, no, it's not like that. Even internships are very useful to build as a human being instead of an IT person. I have seen myself how I developed from being just a regular daily boy to a person who has good built in Bangalore with the US clients. I worked almost with half of the Europe and with the US, with the UK clients. So these things helps us actually. So like how we are building. So this internship is the first step to your IT industry actually. And what we can do is like there's like the social platforms, LinkedIn, Naukri.com, High Risk, Glassdoor. So these are all the platforms in which once we go over there, we can just upload our resume, we can add our details, and we can just search about what we want. But there are a few companies as well. So for example, I'll talk about in Delhi area only because since this we are all into Delhi right now. So there's a Mark Press technology which helps to be the which provides internship for the Delhi web for the web developers. And then Garuda UAV is again there, which helps to be helping people for the front end development. Then there is a Rexel Technologies, and so on. There are so many companies, but what you have to choose before going to a paid internship. So I'll prefer, if either it's a paid or unpaid, go for an internship, but choose your field wisely, what you want. For example, the growing technologies which are there, like JavaScript, full stack development, DevOps engineering, Python, network engineering, Android development, web development. So these are all the things that you can think before choosing and going to the internship. So yeah, pretty much about it. Thank you. Okay. Yes, next question is for Samarth. Samarth, kindly share your experience of working with a startup company. Okay. So first of all, good afternoon, Barkha ma'am. And I agree to your point that these seminars help the students learn and grow further. Indeed. But it is like, I was talking about the ground reality, uh, that these sessions are, I mean, these sessions are good. And mm ma'am, I believe that life is all about a series of wrong decisions until you make a right one. So these sessions indeed help us, and I agree to all of your points. So coming back to the question, uh, Yes, Samarth. the question is about Kindly share your experience of working with a startup company. right. Okay. So I completed my graduation, and after completing my graduation, I joined a startup company, and it was a company started by my friends only. So I was appointed to manage the content and write content and look out look out the offline and online marketing things. तो आप जब एक स्टार्टअप कंपनी में काम करते हो तो you don't have enough funding. First of all, you don't have the enough guidance, and it is just you and your fellow uh, person who is working with you. तो आप काम करते करते सीखते भी हो, ग्रो भी करते हो, गलतियां भी करते हो, गिरते भी हो और उठते भी हो. तो स्टार्टअप कंपनी में काम करने से आपको सीखने बहुत मिलता है, बट इट इज नेवर श्योर, यू कैन नेवर बी श्योर कि what is going to work for you and what is not. So it is all about experimentation and a constant hustle and a series of
learnings, I would say. Thank you, ma'am. Okay, thank you, Samar. Yes, next question is for Pooja. Pooja, what is the scope of data mining and analysis in future? From where we can pick the paid internships to be added in the resume? For the question, ma'am. For data mining, it Yes. is itself is a you know a wide concept. What I have read so far, that I've read this, that data is the new oil, and wherever you go, in whichever sector you go, you will get to see n numbers of data there, like unlimited. You cannot even count them. That's why I said n. So uh, for data mining, I'm not gonna bore you with the all the terms and in its definitions, but I would say it has really very wide concept, and it has very a major scope in future, since I would like to say an instance that if you read a newspaper, then you will get to see about like an event that happened like yesterday. You will get to see where it was held, on which day, which date, and what was the incident and what was the performance. It was like unstructured data, and if you structure it into in the form of table on anything, then you would first make some columns and rows with their attributes and everything that it contains, its aspects, its features, where that name of the incidents, name of the day it was held, and name of the event, what was the event, like in structured form. So it was about an event, but you will get to see many things, like in every sector. If I make a circle, then there is uh, data sector, then every IT sector, medical sector, and finance, marketing. You will get to see n numbers of data, and you will get to see that uh, people want other employees that are able to handle those data. There are need for the people to handle those data. So I would say that it is very it will go to from here to here in future. So I would say one must go for it. And if you are in college and in second or first year, then I would say experience it with some startups or with some internships, where you would get to learn many things. That's for sure. And I can recommend this with like internshala is there. What I have used for the internship and other purpose, you will get to see paid and unpaid internship there, and other work from home or part-time, whatever you like, whatever preferences you put in there. So internshala is there. And other, if you go on a if you go want to go for a job thing, then there is work skill hirect. Many apps are developed so far in pandemic time to avoid the physical contact, so you can do it being a student from your home. So I would say go for it, take this experience, and you will get to see amazing, because you will get to use many tools and many new technologies, which will be very useful if you want to choose this as your future career. So yeah, that's for my one. Okay, Pooja. Next question is for you, Siddhant. What is the scope of game and app development as a career? What are the trending languages and software for game and app development? Okay, so for the app development, as you all know that when we were in 2010 and 2011, at that time सब लोग वेबसाइट को एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन मान रहे थे in the year about 2005 or 2004, right? After 2005, and we got our touch screen phones and all these things. अब touch screen phone सबके पास है इस टाइम पे, स्मार्टफोन सबके पास है. Now अब वेबसाइट, लैपटॉप
के लिए वेबसाइट खोलना इज अ गुड थिंग, बट फोन के लिए वो इतना फिजिबल नहीं है। तो अब क्या हो गया, मोस्टली लोग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं। अब पॉइंट इज कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना एंड उसके लिए एक पर्टिकुलरली यूआरएल देना, तो वो एक ना एक फीजिबल सोल्यूशन नहीं है कंपनी के लिए अर्न करने के लिए। तो कंपनीज ने क्या किया, वो ऐप की तरफ स्विच कर गए। ऐप की तरफ स्विच करने से उन्होंने एक सब्सक्रिप्शन मॉडल डिप्लॉय किया मार्केट में। सब्सक्रिप्शन मॉडल डिप्लॉय करने से कंपनीज की अच्छी खासी अर्निंग्स होने लग गई। लाइक एज यू नो कि पहले नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स सिर्फ एक वेबसाइट थी नेटफ्लिक्स की, एंड आफ्टर दैट उनका सब्सक्रिप्शन मॉडल जब आया तब वो ऐप में कन्वर्ट हो गए। सो ऐप जहां पे आज रोल है ऐप का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। तो ऐप का तो आगे फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा है, एंड ऐप डेवलपमेंट में जाने के लिए आई विल सजेस्ट कि आप अपना बेसिक लैंग्वेजेस को पहले क्लियर कर लो, लाइक C++, जावा, एंड मेनली जावा, बिकॉज जो आप जैसे आपने कोई ऐप बनानी है, किसी ने एंड्रॉइड स्टूडियो यूज किया होगा, तो उसमें फ्लटर एंड डार्ट यूज होता है। तो डार्ट लैंग्वेज इज मच मोर रिलेटेड टू जावा, उसका सिंटेक्स बहुत मैच करता है उससे। तो इफ यू नो अबाउट द जावा, देन कंपनी कैन हायर यू, कि बिकॉज दे नो कि यू आर अ फ्रेशर, राइट। तो एक महीने हम उस इंसान को अगर थोड़ा बहुत सिखा देंगे, क्योंकि उसको पहले से आता है जावा, इफ वी विल लाइक let him practice on the Dart, we can deploy that employee on the app development projects. तो इसका आपका प्रिपरेशन लेवल ये होगा कि अब जावा C++ पे ज्यादा फोकस करो, एंड फ्यूचर में फ्यूचर स्कोप बहुत ज्यादा है इसका, नो डाउट। ऐप अभी फिलहाल तो नहीं बंद होने वाली, नेक्स्ट 10 ईयर्स में कोई भी कुछ भी नया आ सकता है, वी डोंट नो अबाउट दैट, बट द थिंग इज कि ऐप डेवलपमेंट हैज अ फ्यूचर। एंड व्हाट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन मैम? Says that which uh, apps and trending languages and the software we can use for game and app development. ओके फाइन। सो गेम डेवलपमेंट के लिए मोस्टली लोगों ने सुना होगा यूनिटी या फिर अनरियल इंजन, तो ये सारे टूल्स यूज करते हैं। तो मेरा एक फ्रेंड है, आई हैव बिल्ड अ गेम विद हिम। सो वो तो एक गनमैन गंथर था उस गेम का नाम। सो इट वाज जस्ट अ इजी गेम। सो हमने वो यूनिटी के थ्रू बनाया था। हमने उसको प्ले स्टोर पे भी डिप्लॉय किया था, बट बाद में हमने उसको हटा दिया था बिकॉज उसकी कॉस्टिंग हमें उतना पॉकेट फ्रेंडली नहीं हो रही थी हमारे लिए। सो पॉइंट इज कि जब हमने यूनिटी में बनाया उस चीज को, और या फिर किसी भी अनरियल इंजन अगर मैं यूज करता हूँ, तो ये दो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो टूल्स तो हैं, यूनिटी एंड अनरियल इंजन, जो मार्केट में अभी बहुत ज्यादा अवेलेबल है एंड बूस्ट में है। तो अब ये दो चीजें तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। अगर सीख लोगे तो वेल एंड गुड, नहीं भी सीखोगे तो उस ना सीखने का भी एक रीजन है। पॉइंट इज कि जब कंपनीज आपके पास आएंगी, तो उनके पास अगर दो कैंडिडेट्स हैं, एक एक मेरे जैसे कैंडिडेट है जिसको पूरा यूनिटी की नॉलेज है, सब कुछ है मेरे पास, एंड मैं एक गेम बना सकता हूँ, मैंने गेम बना भी रखा है। एक दूसरा कैंडिडेट है जिसको जावा C++ एंड अदर बेसिक लैंग्वेजेस की नॉलेज है उसको, एंड यूआई की भी नॉलेज है, एपीआईज क्रिएट कर सकता है वो बंदा। तो दो कैंडिडेट्स के बीच में वो मेरे को चूज नहीं करेंगे, वो उस बंदे को चूज करेंगे। क्यों? देयर इज अ रीजन, बिकॉज कि उस बंदे को, जैसे मैं यूनिटी का पूरा टूल मेरे को आता है, स्टिल आई कैन ओनली मेक दोस टाइप ऑफ गेम्स जो पहले बिल्ड हो चुके हैं। एक मतलब बेसिक कंसेप्ट जो पहले से आ रखा है, मैं उस टाइप के गेम को बिल्ड कर सकता हूँ। बट जिस इंसान को पहले से कोडिंग वगैरह आती है, वो इंसान यूनिटी तो एक महीने में सीख लेगा, यूनिटी टूल के बारे में एक महीने में सीख लेगा, एंड उसके बाद वो कर लेगा काम पूरा का पूरा। एंड कोई नए कंसेप्ट पे गेम आएगा तो he also have a knowledge of coding purposes, coding languages. So उस वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा वो वाला कैंडिडेट, तो मेरे ऊपर दूसरे कैंडिडेट को ऑप्ट करेंगे। तो बेटर टू फोकस ऑन द लैंग्वेजेस मेनली। इफ यू नो अबाउट द टूल्स, देन इट इज वेल एंड गुड एंड गो फॉर इट, बट पॉइंट इज कि आप थोड़ा लैंग्वेजेस पे भी फोकस करो। जावा C++, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा हार्डकोर कोडर बन जाओ उन सब लैंग्वेजेस को लेके, बट यू शुड नो एटलीस्ट अबाउट दी लैंग्वेजेस, बेसिक पार्ट ऑफ द थिंग्स कि वाई जावा एंड वाई C++। बहुत सारे लोगों ने पबजी भी खेला होगा इधर, तो पबजी इज बेसिकली ऑन C++। तो पबजी का कंसेप्ट जो था बैटल रॉयल का, वो मोस्टली पीसी गेमिंग्स में था। अब जब उसको डिप्लॉय किया होगा, तो उसके लिए प्रॉपरली यूनिटी का कोई पर्टिकुलर टूल नहीं यूज किया होगा, उसमें उन्होंने स्पेसिफिक इंजेक्शंस बोलते हैं, तो इंजेक्शंस लगाए होंगे कोडिंग के। तो वो कोड इंजेक्शंस जिनको आते होंगे उन्होंने ही लगाए होंगे, ये यूनिटी टूल यूजर्स वालों को नहीं लगाए होंगे उन लोगों ने।
तो ऐसा होता है, तो आप better to focus on the languages, and if you know about the tools, then go for it. Okay, Siddhant. Next question is for you, Anupama. Will you be able to maintain a luxury lifestyle? If yes, then what hobbies and skills you pursue to make an unfighttable change in your life? Well, about luxury, it's a very subjective thing. One makes their own luxury depending upon what aspirations they have. Talking about myself, I am very much interested in wealth management, and one should always know how to manage your money. It's not about just earning good amount of money. It's also about how you manage that money in good places so that you will have a variable income in the future. So yes, I would be able to make a luxurious life if God will permit. And secondly, the second part of the question, that what hobbies? Yeah, like I said, investments, and like you all know, bitcoins, NFTs, and cryptocurrencies are on boom, and stock market. These sectors are, on a growing phase, and on all youth oriented people, they are investing from a very small age. So yes, it will give you a very good income in the future, and that's a very very interesting field. So apart from that, I would definitely be investing. But yes, one more suggestion is there: do not go for investment if you don't know about it. You have to first learn about where to invest, otherwise you will end up getting losses, and then that will not be a very good thing. So yeah, managing your money, doing investments in different fields is very important, but one should definitely learn about it, and that's how you'll be able to maintain a luxurious life. Thank you. Okay, Anupama. Yes, Rahul, please answer this question. On what technology or topics shall we do our major and minor projects to make our resume highlighted? Okay. So before answering this question, I would just like to add few points about what I have been hearing. So just example, for example, this about the tool, the Unity one that I was hearing. So what I inform for these things, like what I have inferred from these things is like, it's okay to work on a tool, but your knowledge is very limited when you work on a tool. That's what I have thought, like I have experienced in my terms till yet, because there is thing called source code on which the complete tool is built. It will be with the top level management of that tool developers, so they will give you what you need to play around with these tools. So in working with tool is a great thing. You should know how to work with the tools, because these days the tools are keep rapidly changing. There are new tools in the market every other day, and you need to be on your toes. To be honest, you need to study every day to get the knowledge about these things and be on the top of those things. So talking about the projects, so yeah, basically what we do in the project phase is that we go to the market, we buy the projects, and then that is done. But yeah, sorry. So, but then what I prefer is that prepare yourself, be it on the major project or the minor project, you have to build it yourself. So, for example, like start with a basic thing called C, C++, basic languages. You prepare with the basic languages, then you should have an at least idea about how the project works, how the code structure is there, how the data structure in that code works, so that you can enhance those projects eagerly, and then you will have an enthusiasm. Okay, if I can run at least 2 pieces of line and those things work, so what if I can write at least 10 pieces of line? If I write a 10 piece of code and if that works, what will happen? So yeah, write yourself, learn yourself, engage yourself in your learning new languages and everything. On talking about those on which we can create, so the best thing these days are the development, the web developments, anything that you can work on the JavaScript, because this is the language which is very frequently used by actually all the website these days. Even the bigger websites which are there, all are being used this JavaScript with the embedment of the C++ and the CSS, HTML, all those things are there. So learn with these things, learn basic first, and then eventually, gradually, if you will start writing the code, if you get stuck somewhere, you will get to know that, okay, these things you require more. So
Yeah, so basically JavaScript, web development, app development, Android development. So there are vast number of sources, and there are source code available as well. If you want something, you can just have the source code over there in the internet. You can take it from the internet, and then you can just use it in your code, so that you have an idea as well, and then you go with that. So yeah, thank you. Okay, thank you, Rahul. Next question is for you, Pooja. How good opportunities at entry level should be available? Thank you for the question, ma'am. How good Sorry, ma'am? opportunity? Sorry. I repeat. Oh, sorry, I thought that How, was not for me. Sorry, please go yeah, ahead. thank you, Rahul. How good opportunities at entry level should be available? Entry level, like after graduation, I would say the skills you have worked on till now, that the skills you are short of, that this is my thing, that I should go for this, and the skills that you need to learn more, like which is trending for, like I can get the good earning with this skill, you should go for that, I would say, which you are interested in, because this is the time that you will learn it and then you will earn it, because the time you start managing things, like earning within this like from this age, I don't think that would be the good yeah. I was saying that from this age, the earning thing should not be kept in mind, but the learning thing should be in the mind, because if you get a job, like for instance, if I take my example, I am getting a job of 50,000 from now, for now, but if I take it, I will not get to learn what I'm interested in. Like I'm getting the job of in software development, but I want to go for artificial intelligence to know about it more. So if I take it for now, I would get incremented for 60 to 70 in next 2 or 3 years. But if I learn about artificial intelligence, I would get many higher returns. I would get many higher opportunities after 2 years or 3 years. I would get a package of about 12 to 24 lakhs maybe. So I would say I you should learn about the skills more. You should work or focus on skills more for now. Then the other thing, that earning thing, that eventually you will get that earning or package thing that we all have greed of. Honestly, I have that. So I would say focus on your skill. Then you will get the good opportunity as well eventually, if you keep focusing on learning new, be it anything, like technology, Android development, stack development, anything. Like there are n numbers of things that you should work on, uh, since technologies and IT field is very vast, I would say that. So you should go for that one thing that you are interested in, and which will give you fruitful things in future, keeping future in mind. Then go for it, not for the current earning thing, because it is what I believe, it is the age of my learning, not the uh, not to earn the higher amount of money. So yeah, that's it. Thank you, ma'am. Thank you, Pooja. Yes, Siddhant, kindly answer. What skills should we focus on now for being market ready? Okay, so what skills? Okay, so now I just want to say कि ना एक इंटरव्यूअर जो होता है, पहले तो आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि पूरा हमारा प्रोसेस क्या होगा कंपनी में ज्वाइन होने के लिए. तो हमारा जो इंटरव्यू प्रोसेस होगा, हमने पहले टेस्ट देने हैं. वो अभी टेस्ट क्या है वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले टेस्ट देने हैं, एंड देन हमारा एक टेक्निकल इंटरव्यू होगा. बेसिक प्लान बता रहा हूँ. तो टेक्निकल इंटरव्यू होगा, एंड आफ्टर दैट हमारा एक एचआर इंटरव्यू हो गया, जिसमें बीच में शायद मैनेजरियल राउंड्स भी हो सकते हैं. तो फाइन, तो 3 to 4 लेवल्स में हमारा पूरा इंटरव्यू
डिवाइड होता है। तो जो फर्स्ट लेवल होता है, जो आपका फर्स्ट रिटर्न टेस्ट बोल सकते हैं उसको, तो उसमें क्या होता है कि आपका जितना भी नॉलेज है आपको आईटी फील्ड की, अब नॉट आईटी फील्ड बट आईटी सब्जेक्ट्स की, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया, लिनक्स हो गया, आपका एनालिटिकल रीजनिंग भी होगा उसमें, एंड आपका जावा के पर्टिकुलर क्वेश्चंस हो सकते हैं, सी प्लस प्लस के पर्टिकुलर क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आते हैं रिटर्न टेस्ट में। एंड जिस कंपनी में मैं प्लेस हुआ हूँ उसमें भी उसका फर्स्ट राउंड में मेरे को 10 सब्जेक्ट्स आए थे मेरे, लाइक अबाउट 100 क्वेश्चंस थे उसमें फर्स्ट राउंड में, और 10 सब्जेक्ट्स थे जिसमें ओएस, लिनक्स, एनालिटिकल रीजनिंग, सी प्लस प्लस, जावा, एंड probably it has AI subject also. So मतलब एग्जैक्टली सारे सब्जेक्ट्स के नाम याद नहीं, बट ये सारे सब्जेक्ट्स थे। हाँ, सीएन भी था, कंप्यूटर नेटवर्क्स भी था। तो सीएन मैं इसलिए मेंशन इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का सीएन वीक होता है। एंड बट तो मैं ये बता दूं कि अगर आप किसी अच्छी कंपनी में, किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाहते हो, लाइक इवन आप डेवलपमेंट वाली फील्ड के लिए भी आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो बट आपको सीएन के बारे में थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। सीएन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, सीक्वल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, माई सीक्वल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो ये जो आपके बीसीए के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप उनके बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज भी होगी तो आप ये फर्स्ट राउंड क्लियर कर जाओगे। सेकेंड राउंड आता है कि आप कोडिंग वाला राउंड आता है। अब कोडिंग राउंड ना दो तरीके से होते हैं। अब एक पहला तरीका ये होता है, कंपनीज आपको 2 क्वेश्चंस दे देगी कोडिंग के, एंड यू विल सॉल्व दोस क्वेश्चन एंड सबमिट दैट क्वेश्चन। दूसरा तरीका ये होता है कि आपको एक टेक्निकल इंटरव्यूअर आ जाएगा कॉल पर, वो आपको स्क्रीन शेयर करने के लिए बोल देगा, और आपको वो एक क्वेश्चन दे देगा, आपको वहीं पर ही आप अपनी स्क्रीन में नोटपैड पे आपको कोड करके दिखाना पड़ेगा, या फिर हैकर रैंक हो गया, लीड कोड हो गया, या कहीं पे भी आपको कोड करके दिखाना पड़ेगा। तो आप उसमें क्या है कि आपको वो कोडिंग का लेवल दिखेगा कि आप किस तरीके से कोडिंग कर सकते हैं, एंड आप उस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हो। तो ये दूसरा राउंड हो गया। अब तीसरे राउंड में हमारा मैनेजरियल राउंड होता है। अब मैनेजरियल राउंड में क्या होता है कि जो आप जिस भी टीम में आप जाने वाले हो, तो उसका मैनेजर आपसे बात करता है कि इफ यू आर अ गुड फिट फॉर दिस कंपनी, फॉर दिस टीम, तो आपसे बहुत से बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे। एंड मैनेजरियल राउंड में कभी कभार टेक्निकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। एंड मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन मैनेजरियल राउंड आल्सो। एंड आफ्टर द मैनेजरियल राउंड वी हैव एचआर राउंड। तो एचआर राउंड के बारे में तो सबको पता ही होगा। सो अगर आप कंपनी रेडी, मार्केट रेडी के लिए बारे में बात कर रहे हो, तो आई हैव डिस्कवर्ड माई सेल्फ एंड कि मेरे को 5 चीजों की जरूरत थी। तो वो 5 चीजें मैंने लिखी हुई हैं। तो हमारी प्रिपरेशन, हमारा रेज्यूमे, स्पेशलिटीज, हॉबीज एंड वर्सेटैलिटी। तो ये 5 चीजें अगर मेरी बिल्कुल परफेक्ट है, मेरे को पता है कि क्या है और कैसे करनी है, तो वो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। प्रिपरेशन में आपका, जैसे मैंने बताया कि बीसीए के कोर सब्जेक्ट भी अगर आप उनके थ्योरेटिकली आपको अच्छे से आते हैं ना, तो यू आर गुड टू गो फॉर द फर्स्ट राउंड। सेकेंडली आपका रेज्यूमे। अब रेज्यूमे में क्या होगा कि 2 तरीके के रेज्यूमेज होते हैं। एक एक बंदा क्या करेगा, एक कैंडिडेट क्या करेगा, वो वेबसाइट पे जाएगा किसी, कुछ resumebuilder.com, लेट्स अज्यूम देयर इज एन वेबसाइट resumebuilder.com, वहां पे आपने डिटेल्स डाल दी और उसने एक फैंसी सा रेज्यूमे आपको बनाकर दे दिया। तो और एक दूसरा कैंडिडेट होगा जिसका एक बहुत ही बेसिक लेवल का रेज्यूमे है, जिसमें उसने एक हेडिंग डाली है एंड उसके नीचे सब टॉपिक्स, फिर हेडिंग, फिर सब टॉपिक्स एंड एक्सप्लेनेशंस। तो ये 2 चीजें होंगी। अब 2 तरीके के रेज्यूमे हैं। अब आपको पता है कि कंपनीज में ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस आती हैं, रेज्यूमेस आते हैं। तो आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा कि नहीं होगा, यू डोंट नो। बट रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करने के लिए कंपनीज एक टूल यूज करती हैं। तो उस टूल में क्या होता है, वो टूल रीड करता है लेफ्ट टू राइट। पर अब जो जिस बंदे ने एक फैंसी सा रेज्यूमे बना रखा है, वो टूल उस फैंसी रेज्यूमे को रीड ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसमें उन्होंने अलग अलग टेक्स्ट यूज कर रखे हैं, अलग से फॉन्ट यूज कर रखे हैं, एंड मार्जिन्स यूज कर रखी हैं। तो उस टूल को वो यूज समझ नहीं आएगा, तो वो उस रेज्यूमे को ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देगा, इवन इफ यू हैव बेटर क्वालिफिकेशन और समथिंग। तो आपको अपने रेज्यूमे को सिंपल रखना है, क्योंकि जो टूल्स होते हैं, जो बड़ी कंपनीज होती है, उसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस आती है। तो वो अब उस टूल के थ्रू आपका इजीली डिटेक्ट हो जाएगा, इजीली शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है आपकी स्पेशलाइजेशन या स्पेशलिटीज, जो बोल लो कि मैंने बहुत से लोग देखे हैं कि अपने रेज्यूमे में लिख देते हैं कि सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, डार्ट, फ्लटर, सब कुछ लिख देते हैं, सीक्वल,
बट जब पूछो तो कुछ नहीं आता। तो पॉइंट इज कि जैसे मैंने अपने रेज्यूमे में लिखा था C++ एंड जावा, फाइन, मेरे को ये था कि इनसे कुछ पूछ लोगे तो आई एम वेरी गुड, कि मतलब मेरे से कुछ भी पूछ लो इनके बारे में, आई एम गुड टू गो। बट अगर कोई दूसरा बंदा, अगर आप जैसे मैं C++ लिख रहा हूँ, मेरे को C++ के बारे में जानकारी है ही नहीं, तो वाई आई एम राइटिंग दिस थिंग ऑन माई रिज्यूमे, एंड उसका एक गलत इंप्रेशन भी पड़ जाता है हमारे इंटरव्यू में। तो हमारी स्पेशलिटीज को आपको ढंग से लिखना है, एंड आपका प्रोजेक्ट्स भी आपके बहुत ज्यादा मैटर करते हैं पूरे इंटरव्यू में। तो प्रोजेक्ट्स आपने क्या बनाए हैं, कैसे बनाए हैं, एंड अगर आपने प्रोजेक्ट कहीं से खरीदा है, तो मैं पहले ही बोल दूं कि वो उनको 2 सेकंड में पता चल जाता है कि आपने खरीदा है कि क्या करा है, बिकॉज कि क्योंकि जो आपका इंटरव्यू ले रहा है टेक्निकल वाला बंदा ही होगा, उसको पता है ऑब्वियसली कि आपने खुद से बनाया है कि आपने कहीं से बाय करा है। आफ्टर दैट हॉबीज का सेक्शन होता है सबके रेज्यूमे में, और वो हॉबीज का सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट क्यों है कि जब आपका आपका जब आप सारे लेवल क्रॉस कर लोगे, तो आपके मैनेजरियल इंटरव्यू या फिर आपके HR इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है हॉबी से रिलेटेड, जिसमें आपने कभी ध्यान दिया ही नहीं, तो वहां पे इतने एंड पॉइंट पे आके आप रिजेक्ट हो जाओ तो वो अच्छा लगेगा नहीं। तो HR और मैनेजरियल राउंड के लिए आपको हॉबीज जो है, पहली बात तो ये है कि अगर आप कोई हॉबीज नहीं लिख रहे तो वो क्वेश्चन करेंगे कि भाई कैसे इंसान हो आपकी, बिल्कुल भी कुछ करते ही नहीं हो क्या। मतलब ऐसा तो हो नहीं सकते कि 24 घंटे में से 10 घंटे अगर आप सो रहे हो तो बाकी के 14 घंटे आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कुछ तो हॉबीज होंगी, कुछ तो करते होगे। तो ये सब तो, और तो आपकी हॉबीज होना भी जरूरी है, और सबकी हॉबीज होती हैं, वो आपको कैसे दिखानी है, कैसे पोर्ट्रे करनी है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो कंपनी रेडी या फिर मार्केट रेडी होने के लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। तो ये सारी चीजों को अगर आप लाइंड अप करोगे, और इन सब चीजों पे अगर आपको मतलब बिल्कुल ही अगर सैंपल के लिए अगर आपको रेज्यूमे बिल्ड करने में अगर हेल्प चाहिए होगी, तो वी कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। ओके, यस मैम। Okay, thank you, Siddhant. Okay, alumni, my last question to you. Anyone can answer. Are you connected with us on social media platforms like LinkedIn, Alma Connect? Yes, ma'am. We really appreciate our alma mater for providing us this amazing platform named Alma Connect, as it keeps us connected and updated about the institution's growth, and also we have provision of seeing and posting job for our batch and current batches. So I find it very useful for other students and for alumni as well. It is nice. Anyone else? I'm also connected on LinkedIn, ma'am, and I think that is a good way to connect professionally with our alumni. Okay. Okay. Thank you all for your time and patiently answering the questions. So before Thanks. concluding today's event, may I now request Puja Sharma, ma'am, HOD and IT, to come forward and propose the formal vote of thanks. Am I audible to all of you? Yes, Yes, ma'am. Thank you, Yes, ma'am. Ratika ma'am. A very good evening to everyone present here. It's my privilege to propose a vote of thanks and acknowledge the contribution of those who really worked hard to make this alumni session happen. At the outset, I would like to thank our Honorable Chairman, Dr. R.K. Tandon sir, for his vision and encouragement in planning and organizing such events, which I am sure is very beneficial for our students. I'm grateful to our respected director, Dr. Barkha Behel ma'am, for sparing her valuable time and for being the catalyst that stimulated us to do our best and standing as pillars of strength. It gives me immense pleasure to propose a vote of thanks for my dear alumni. I would like to extend a vote of thanks to all our distinguished panelists for the day: Rahul Sharma, Anupama, Siddharth Pant, Puja Sharma, Prem Kumar Mishra, Samarth Shukla, for sharing their time and guiding and enlightening our students by handling their queries and helping them decide the career path for a bright future. I'm sure your thoughts have enlightened our students' minds and have shown them a new path. My gratitude to all the speakers for gracing the occasion and sharing their opinions today. I would also like to thank all the student volunteers, Abhinav, Aditya, and Namira, for designing exquisite poster and presentation.
My deep sense of appreciation for all the CS and IT department faculty members, especially Ritika ma'am for coordinating so well and being a wonderful moderator. Last but not the least, I'm truly thankful to my dear students for asking us to conduct a counseling session for them. I would like to thank the students of 6th and 4th SEM students for helping us with the questions they had in their mind. And I'm sure by now all your concerns and queries are resolved as the alumni tried their best to brief you in almost all domains related to job, startup, and higher education. Once again, on behalf of TIPS fraternity, we are truly grateful to our alumni to connect today to transform tomorrow. Thank you all for your participation. It was indeed a fruitful session. Thank you all. Thank you, ma'am, for your kind appreciation. Now, I would like to request everyone to switch on their cameras for a virtual photograph. Ajay sir, done? All right, everyone. I think he has taken the pick. Thank you all for connecting. Yes. Thank you all for your time. Thank you, Ritika ma'am. Thank you, everyone, Thank the you, panel everyone, for members. joining us today. It was really nice to have you on the board for today's session. Thank you so much. Thank you, Mukta everyone. ma'am. Thank you, Ritika ma'am. Thank you, ma'am. It Cheers felt and thank great. you. It felt great seeing Ritika ma'am, Mukta ma'am, hearing Mukta ma'am after a long time. You're most welcome to come over sometime. You all are most welcome because it'll be a good thing to meet you all after almost 2 years. Yeah, I'm right. So we can plan someday. We can actually meet. Your Surely, ma'am. trophies are waiting with us for today's session. So please come and collect that also. It'll be really good. Of course. Sure. Thank you all. Of Bye course. for now. Okay. Thank you all. Great, Thank ma'am. you, Thanks, ma'am. Thank you everyone. so much.